Yeah, so today we'll start with poem that is 1.4. Have you ever seen? Okay. Now this poem is entirely based on homographs. Okay, पूरा poem बच्चा है homographs पे based है. Now what is homographs? So homographs, these are the words that are spelled the same. Okay, that are spelled the same, but they have different meanings. के जिसका spelling तो same होता है, but उनके meanings जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. For example, lead. Okay, lead या lead, whatever you say, it would be homograph because it has two meanings, right? एक तो होता है, क्या होता है lead का एक meaning, which is referring to a metal, right? जो lead metal है, lead जिसको हम बोलते हैं, वो एक है. And और दूसरा क्या होता है? A person who leads, right? एक leader जिसे हम बोलते हैं, right? समझ रहा है everyone? Yes, miss. Yeah, so that is homograph. So this entire poem is based on homograph. Now, what does homograph means? We have seen. It has same spelling, but it has different meanings. Okay, so now we will read poem once. Does the needle ever wink its eye? Why doesn't the wing of a building fly? Can you tickle the ribs of a parasol or open the trunk of a tree at all? Yeah. Are the teeth of a rake ever going to bite? Have the hands of a clock any left or right? Can the garden plot be deep and dark? And what is the sound of birds bark? Have you ever seen a sheet on a riverbed or a single hair from a hammer's hat? Has the foot of a mountain any toes? And is there a pair of garden hose? ठीक है? Okay. 1, 2 और 3. ओके, ठीक है, तो हम एक एक लाइन को समझते हैं. द फर्स्ट लाइन इज, हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड? नाउ व्हाट आर दे ट्राइंग टू से ओवर हियर? दैट बेड ओवर हियर मींस टू थिंग्स, राइट? कि जो बेड है नॉर्मली इट इज टू थिंग्स. होमोग्राफ अगेन, एक बेड है जो हमारा नॉर्मली वी हैव इन आवर होम, एंड अनदर बेड व्हिच दे आर टॉकिंग ओवर हियर इज बच्चा रिवर बेड. कि जो रिवर का बॉटम पार्ट होता है ना, that is known as bed, जिसे हम क्या बोलते हैं? We call it river bed. So they are telling us or they are asking us, have you ever seen a sheet on a river bed? क्या हमारे बेड पे जैसे हम शीट्स डालते हैं, जैसे हम चादर डालते हैं, वैसे ही क्या कभी आपने रिवर बेड के ऊपर शीट्स देखी है क्या? वैसे. So this entire poem, बच्चा, it will force you to think कि क्या, like it will basically show you homograph, and at the same time they will keep you, they'll keep you understand कि बाबा ये क्वेश्चन भी ऐसा, मतलब ऐसा भी कभी होता है क्या? So they will force you to understand, या they will force you to think that whether this thing also happens वैसे. तो दे आर आस्किंग अस कि जैसे हमारे घर पे बेड होता है, सो यहाँ पे क्या हो गया? ये बेड को एज अ होमोग्राफ यूज किया है. एक बेड क्या हो जाता है जो हमारा घर का बेड होता है, एंड अनदर बेड इज नोन एज रिवर बेड. सो दे आर आस्किंग दैट हाउ वी कीप शीट्स ऑन आवर बेड. डू रिवर बेड ऑल्सो हैव शीट्स? दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. समझा फर्स्ट लाइन सबको? Yes, miss. Yeah. So over here, bed is the homograph, the word which is used. One meaning is a piece of furniture which we have, and another means the bottom of river. Okay? Now we will move to the second line. Or a single hair from a hammer's head. ठीक है, that यहाँ पे अभी word कौन सा use किया है? Head use किया है. ठीक है, that or a single hair, like we humans we have hair on our heads. हमारे हेड के ऊपर हमारे पास बाल होता है. वैसे ही जो हैमर है, हैमर क्या होता है? जो हथौड़ा है, जो हथौड़ी जिसे हम बोलते हैं, उसका हेड क्या होता है? ये पार्ट. बच्चा, दिस पार्ट इज नोन एज हैमर्स हेड. तो हैमर का जो ये पार्ट है, हेड जिसे हम बोलते हैं, क्या उसके ऊपर भी हेयर्स है? वैसे. So do hammer have hairs on the head as per
we humans have hairs on the head. Is it clear? Yes. Yes, Yes, miss. The word over here which is used as a homograph is head. Okay, head means it can be the head of a person. At the same time, head also means the top portion of hammer. कि ये वाला जो part है hammer का, that is known as head. Next, has the foot of mountains any toes? Okay, that have humans, we humans have foot, right? And हमारे toes भी होते हैं. तो ये जो mountain है, mountain का भी foot होता है, ठीक है? Has the foot of mountains any toes? तो mountain का foot कौन सा होता है बच्चा? ये, like this is the mountain, so the base we have, that is known as foot. So they are asking like how we humans have foot and we humans have toes. Do mountain also have foot, but do they have toes? So which word over here is used as homograph? Can anyone say? Foot. Miss Yeah. foot. Yeah, so the foot over here is used as homograph. One means the foot of a human body and another over here means the lowest part of the mountain. के जो mountain होता है उसका जो lowest part होता है ना बच्चा उसे हम बोलते हैं foot. Next, and is there a pair of garden hose? ठीक है, now is there a pair of garden hose? Now what does hose means over here? Hose मतलब ये जो ऐसा wire type structure होता है ना, ये ऐसे वायर्स का जो बंडल होता है इसे हम बोलते हैं होस. तो एंड होस को हम लाइक होस किसे बोलते हैं? होस जो हमारा शू या ये जो हमारे सॉक्स होते हैं या स्टॉकिंग्स जो हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होस. नाउ होस है बच्चा जो सॉक्स है, जब आप बाहर खरीदने जाते हो तो यू डोंट गेट अ सिंगल वन, राइट? आपको हमेशा पेयर में मिलता है, राइट? दो सॉक्स का पेयर मिलता है या दो स्टॉकिंग्स का पेयर मिलता है. कभी ऐसा सिंगल, हाँ भाई ये ले लो सॉक्स, ऐसा नहीं मिलता, राइट? They're always find in pairs. So even the writer, the poet over here is asking us कि आपके जो pairs होते हैं, जो socks का pair हो गया या stockings का ये हो गया pair, that is in pairs, that is in जोड़ी, जोड़ी में आपको मिलता है. तो क्या होस, ये जो होस है, क्या वो भी आपको पेयर में मिलता है? क्या वो भी आपको ऐसे दो दो ऐसे मिलते हैं वैसे? So which word over here is used as a homograph? Hose. होस, होस, होस. होस मतलब क्या? स्टॉकिंग, वैसे स्टॉकिंग. तो सॉक्स, स्टॉक्स या स्टॉकिंग पकड़ लो आप. तो सॉक्स कैसे आपको जोड़ी में मिलते हैं, वैसे ये जो होस है, ये जो वायर है, क्या वो भी आपको जोड़ी में मिलता है वैसे? तो यहाँ पे वर्ड क्या हो गया? होस जो हो गया वो एज अ होमोग्राफ यूज किया गया है. दैट होस, one means a flexible pipe and one means a pair of socks वैसे. So this is again the question which has been asked. ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने चार लाइन देखी. One is, have you ever seen a sheet on river bed? कि as per we have bed in our house, we have sheets on it. So जो river bed है, क्या उसके ऊपर आप लोगों ने कभी sheet देखी है? The second one is, or a single hair from a hammer's head. Okay, hammer's head, that how we humans have head and we have hair on it. Do hammer also have a head, but does that hammer ka head have hair on it? So again, this is a question. Has the foot of a mountain any toes? Like how we humans have foot and we humans have toes, mountain also have foot, but does that foot of mountain has toes? That was a question which was asked. And next is, and is there a pair of garden hose? Okay, like how we as a hose, like hoses जो socks है या stockings है जो हमें पैर में मिलते हैं, similarly जो garden में जो wire pipe है जो इसको हम hose बोलते हैं, क्या वो भी आपको पैर में मिलते हैं? So these are the four lines which we have seen so far. Is it clear everyone? Anyone with any doubt? no, miss. Okay, okay, thank you.
Next, does the needle ever wink its eye? Why doesn't the wing of building fly? Can you tickle the ribs of a parasol और open the trunk of a tree at all? तो ये अब हम एक एक लाइन देखते हैं ये वाली. Does the needle ever wink its eye? Okay, like how we humans have eyes and we can wink it, right? हम उसे wink कर सकते हैं. But needle के पास भी eyes है. Needle का eye कौन सा होता है? ये वाला जिसमें हम धागा डालते हैं. Okay, so does the needle जिसके पास आई है, नीडल का भी आई है, तो क्या नीडल का आई विंग करता है? वैसे. So which is the homograph word which is used over here? I. I. Yeah. Miss One I. is, yes, thank you. One is a part of human body के जो हमारे पास eyes है वो, और एक है जो needle का hole है जिसे हम क्या बोलते हैं? Eye बोलते हैं. So again they are asking the same question that how we humans as a eye, we humans we have eye and we wink it. Needle have also eye, but do they wink it? So that is the question which is asked. Now this is interesting. Why doesn't the wing of a building fly? ठीक है? That birds they have wings and they fly. So even buildings they have wings, right? हमारे पास buildings में we have A wing, B wing, C wing ऐसे wings होते हैं. तो क्या वो wings fly करते हैं? So this is the question. So you know this is interesting कि एक ही homograph के word को ऐसे select किया है कि एक होता है और एक नहीं होता, और जो नहीं होता वो क्यों नहीं होता, that we are forced to think. Okay, so this is something interesting. Yeah, so again this is the question which is asked. Yeah, how birds they have wing and they fly. Building also have wings, but do they fly? So over here the word which is used as a homograph is wings. ठीक है, एक wing है जिसका मतलब है part of a bird body, जो bird के पास wings होता है वो, और एक होता है जो हमारे sections होते हैं building में जिसे हम wings बोलते हैं. Clear everyone? Yes, miss. Yes. Okay. Yes, miss. Okay, now the next one is, can you tickle the ribs of a parasol? ठीक है, अब ribs क्या होता है बच्चा? Rib अगर आप लोग ने साइंस में पढ़ा होगा, rib is like a rib cage which we have inside our body. So this structure is known as rib cage. और पैरासॉल का मीनिंग क्या होता है बच्चा? यहाँ पे पैरासॉल इज अम्ब्रेला. ठीक है, अम्ब्रेला को हम बोलते हैं पैरासॉल. तो इफ यू सी प्रॉपरली, एक मिनट, या दिस इज ह्यूमन रिब केज. ठीक है, एंड पैरासॉल का रिब केज कौन सा हुआ? तो ये सारे जो ये अटैचमेंट्स होते हैं ना, उसको ये लोग ने एज अ रिब कंपेयर किया, एंड ये जो यहाँ पे जहाँ पे ये मिक्स होते हैं उसे हम बोलते हैं रिब केज. ठीक है, नाउ कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ पैरासॉल? टिकल मतलब क्या होता है बच्चा लोग? व्हाट डू यू मीन बाय टिकल? मिस गुदगुदी. या गुदगुदी करना हम बोलते हैं ना, डोंट टिकल मी, वैसा. तो टिकल मतलब क्या? गुदगुदी करना. तो यहाँ पे इट डजंट मीन्स कि एक्चुअली आप अंदर रिब केज को टिकल कर रहे हो, बट इट मीन्स दैट यू टिकल अ ह्यूमन बॉडी, राइट? इट इज पॉसिबल टू टिकल अ ह्यूमन बॉडी. The human body has rib cage in it, and it is possible for anyone to tickle a human body. But क्या आप ये पैरासॉल जो है, ये जो अम्ब्रेला है, इसके रिब्स को, मतलब क्या ये जो वायर्स है, ये जो अटैचमेंट है, क्या आप इसको टिकल कर सकते हो? क्या आप इसको गुदगुदी कर सकते हो? वैसा. तो इसको तो गुदगुदी करने गए तो ये पूरा टूट जाएगा. So this is what they mean over here, that it is possible for us to tickle the ribs of rib of a human body, but is it possible for us to tickle the ribs of parasol? समझा ये वाला लाइन? Yes, miss. Yeah. Yes, miss. So over here, yes. So over here, ribs have two meanings. One is the curved bones articulated in pairs to the spine. ये जो spine में जो curved bones होते हैं वो one एक human body में होता है वो. And umbrella का ribs is the curve of umbrella. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे homograph use किए हैं. Now the second one is, or open the trunk of a tree at
ऑल। तो यहाँ पे ट्रंक के बच्चा दो मीनिंग होते हैं, एक ट्रंक जो ट्रीज का होता है, वुडन पार्ट दैट इज नोन एज ट्रंक, एंड एक पार्ट होता है जो ट्रंक, जो पेटी हमारे घर पे होती है, उसे भी हम ट्रंक बोलते हैं। तो ये जो घर की पेटी होती है, जो घर का ट्रंक होता है, इट इज इजी टू ओपन, राइट? वी कैन ओपन इट, वी कैन स्टोर थिंग्स इनटू इट एंड वी कैन क्लोज इट। बट इज इट पॉसिबल फॉर अस कि हम ये ट्री का ट्रंक को ओपन कर पाए? वैसे, okay, so the word which is used as a homograph over here is trunk. Okay, one is tree का trunk, जो tree का trunk होता है, wooden part होता है वो, and another is the object in which we store our things, so that is known as trunk. Clear everyone? Yes, miss. Okay. Yes, miss. Yeah, so far we have seen this four line. Does the needle ever wink its eye? कि हमने देखा as human body we have eyes and we tickle it. Sorry, we wink it. But do needle also have eye? But is it possible for needle's eye to wink? ये वाला एक part हम लोग ने देखा. फिर हम लोग ने देखा that we birds have wings and they can fly. But even building, they have wings. They have section which is A wing, B wing, but they do not fly. वैसे. Then we have seen the third one, which is you can tickle the ribs of can you tickle the ribs of parasol? That we as a human body, we have ribs inside us, and it is easy for a person to tickle a human. Like it is easy for a person to tickle another person. But can you tickle the ribs of parasol? Parasol over here we have seen it means umbrella. And umbrella के जो ribs है, क्या आप उसको tickle कर सकते हो? That is the question which is asked. And the next one is, or open the trunk of a tree at all. The trunk over here means the thing which we, a petty type thing which we use for storing things. At the same time, it means tree का trunk. तो हम वो पेटी वाले ट्रंक को तो खोल सकते हैं, बट क्या हम ट्री के ट्रंक को खोल सकते हैं? That is what we have seen so far. Next, are the teeth of a rake ever going to bite? Have the hands of a clock any left or right? Can the garden plot be deep and dark? And what is the sound of a bird's bark? ठीक है, तो अभी एक एक लाइन हम देखते हैं. Are the teeth of a rake ever going to bite? Okay, अभी हमारे humans के पास हमारे पास teeth होते हैं and through which we can bite someone or we can bite ourselves as well. But ये जो rake होता है, rake, this is like a instrument which is mostly used in gardening. तो ये जो part होता है ना बच्चा, इसको हम बोलते हैं rake. तो if you see, it is like a tree teeth like structure. तो इसको हम बोलते हैं रेक. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे टीथ को हम बाइट के लिए यूज कर सकते हैं, तो क्या ये रेक है, उसके ये जो टीथ है, क्या वो बाइट करते हैं? वैसे समझा व्हाट दे मीन ओवर हियर? Yes. Yes, miss. ये जो रेक है, उसके ये जो टीथ है, डू दे बाइट? सो दिस इज द क्वेश्चन, दैट हाउ वी ह्यूमंस हैव टीथ एंड वी कैन बाइट. Do the teeth of rake can bite? वैसा. Next, have the hands of a clock any left or right? That we humans, we have hands, right? And हमारे hands में we have left hand, we have right hand. So humans के पास hands होते हैं and हमारे पास left hand और right hand ऐसे options है. But ये जो clock है, clock के जो hands है, उसमें क्या left और right है? वैसे तो we see, we have minute hand and we have hour hand. ठीक है, minute और hour के रूप में we have differentiation. बट हम क्लॉक में ऐसा नहीं बोलते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, राइट? हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? मिनट हैंड, आवर हैंड, वैसे. तो यहाँ पे वो लोग वो पूछ रहे हैं दैट हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? कि ह्यूमंस को भी हैंड्स है, वॉच को भी हैंड्स है, बट ह्यूमंस के हैंड्स को लेफ्ट और राइट ऐसे होता है. तो क्या क्लॉक के हैंड्स को लेफ्ट और राइट होता है? दिस इज द क्वेश्चन व्हिच दे आर आस्किंग. क्लियर एवरीवन? Yes. Yeah, so over here teeth means one is the low. Okay, sorry, ये पहले का स्लाइड का हो गया. तो teeth क्या है यहाँ पे? लोअर पार्ट ऑफ रैक. जो ये वाला एग्जांपल हम लोग ने देखा, वो उसमें teeth is ये लोअर पार्ट ऑफ रैक. ये जो रैक है उसका लोअर पार्ट, and one is the human teeth.
वैसे। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे हैंड्स, राइट। हैंड्स है जो यूज किए गए, वन इज द ह्यूमन हैंड एंड वन इज द हैंड्स ऑफ क्लॉक। नाउ कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? ओके, अभी यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है बच्चा लोग, देखो यहाँ पे द वर्ड प्लॉट इज यूज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लॉट? प्लॉट मतलब कैसे, इफ यू आर लाइक मूवी के कंसिडरेशन में है, एक आप मूवी देखते हो तो मूवी में कैसे है, यू हैव बिगिनिंग, राइट, मूवी स्टार्ट होती है, फिर बीच में आपको क्लाइमेक्स होता है एंड देन मूवी एंड्स। So movie has a structure, it has a beginning, it has a climax, it has a ending, right? So movie, it can be deep and dark, it can be horror, it can be simple movie, it has deep and dark मतलब क्या, it can be horror, dark thoughts हो सकते हैं। तो इसको हम प्लॉट बोलते हैं कि ये जो डिविजन है ना, बिगिनिंग, क्लाइमेक्स और एंडिंग, ये जो 3 डिविजन होते हैं उसको हम प्लॉट बोलते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे प्लॉट है उसमें कैसे डीप और डार्क होता है, कभी मूवी डीप होती है कभी डार्क होती है, वैसे ही जो गार्डनिंग वाला प्लॉट होता है, गार्डन का जो प्लॉट होता है, क्या वो भी डीप और डार्क होता है? तो वी ऑल नो दैट इट इज नॉट डीप एंड डार्क, इट इज नॉर्मल प्लेन गार्डन का प्लॉट वैसे। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा है, कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? के जैसे मूवी का जो प्लॉट है जो डीप एंड डार्क होता है, क्या गार्डन का जो प्लॉट है वो भी डीप एंड डार्क होता है वैसे? ओके, क्लियर, समझे सबको? Yes, miss. या तो यहाँ पे प्लॉट के दो मीनिंग हो गए। या बच्चा, थैंक यू। तो यहाँ पे प्लॉट का क्या हो गया, दो मीनिंग हो गया कि एक जो स्मॉल एरिया ऑफ गार्डन है वो, और दूसरा है द काइंड ऑफ स्टोरी। ओके, काइंड ऑफ स्टोरी मतलब क्या, देख बेसिक स्ट्रक्चर जो हर एक स्टोरी या हर एक मूवीज में होता है, यू हैव बिगनिंग, यू हैव अ क्लाइमेक्स एंड यू हैव अ एंडिंग, सो दैट इज नोन एज प्लॉट। ठीक है, नेक्स्ट, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ अ बर्ड्स bark? ठीक है, कि what is the sound of birds bark? now birds is ये बच्चा जो ट्री का ट्रंक होता है ना, जो ट्री का ट्रंक होता है वो जब ऐसे एकदम रस्ट हो जाता है या पूरा निकल जाता है ना, उसे हम बोलते हैं बर्ड्स। ठीक है, उसे हम वी कॉल इट एज बर्ड्स। तो ये जब मतलब वो ऐसे एकदम रस्ट हो जाता है कि आप उसको लिटरली ऐसे निकाल सकते हो ट्री के ट्रंक को, तो इसे हम बोलते हैं बर्ड्स। ओके, तो इसका मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू से ओवर हियर, कि कैसे बर्ड्स बार्क मतलब क्या, ये जो डॉग जैसे बार्क करता है वैसे ही ये जो बर्ड्स है, क्या जब हम इसको भी रिमूव करते हैं तो क्या इसका भी बार्किंग का आवाज आता है वैसे? Are you understanding like how dog barks? Similarly, this birch, which is a wooden structure जो पूरी तरह से रस्ट हो गया रहता है ना, आप उसका लिटरली ऐसे स्किन निकाल सकते हो, तो जब आप उसका स्किन निकालते हो तब क्या वो आवाज करता है? This is what they are trying to say. Is it understood? Yes, miss. Yes. Yeah. So what is the word which is used over here? Bark. Okay, bark को as a homograph use किया है. One is the sound of dog, के जो dog bark करते हैं वो, and one is the hard cover of tree. ये जो tree का जो एकदम hard cover है उसको हम बोलते हैं bark. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है जैसे आपका birch है, ये जो birch है wooden structure है वो bark करता है, सिमिलरली क्या डॉग भी, एक मिनट है बच्चा, एक ही मिनट, मम्मा। या सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि यहाँ पे बाग का वर्ड यूज किया है कि बाग जो है, जो साउंड ऑफ डॉग है, सिमिलरली ये जो वुडन स्ट्रक्चर है जब वो निकलता है तो क्या वो भी बार मतलब वो भी आवाज करता है? समझा बच्चा लोग ये लाइन? Yes, miss. Yes, ओके miss. Yes, miss. ओके ओके, नेक्स्ट। ओके सॉरी, होया में अपना खत्म हो गया। सो दैट वाज द फर्स्ट
लास्ट 4 लाइन्स, ठीक है। लास्ट 4 लाइन्स क्या थे? आर द टीथ ऑफ रेक एवर गोइंग टू बाइट, के ये जो रेक है उसका टीथ कभी बाइट करेगा? या हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट और लाइक वी ह्यूमंस हैव हैंड्स, वी हैव लेफ्ट एंड राइट, तो जो क्लॉक के हैंड्स है क्या वो लेफ्ट और राइट होते हैं? फिर हम लोग ने प्लॉट का देखा कि प्लॉट कैसे डीप एंड डार्क होता है, वैसे ही कभी गार्डन प्लॉट जो है वो डीप एंड डार्क होता है क्या, वैसा। एंड लास्ट इज व्हाट इज द साउंड ऑफ बर्च बार्क, ठीक है, कि हाउ dog barks, they create a sound which is known as barking. Similarly, जो ये bark है wooden structure, जब वो निकलता है तब वो sound करता है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ने क्या देखा? होमोग्राफ देखा, जिसका मतलब क्या है? सेम स्पेलिंग होता है बट सबका मीनिंग अलग अलग होता है। So this was the entire poem. We will once read it again. Have you ever seen a sheet on a river bed? कि हम लोग ने देखा हमारे पास कैसे बेड होता है, उसमें शीट्स होते हैं। सिमिलरली जो रिवर बेड है क्या उसका शीट होता है? जैसे वी ह्यूमंस हैव हेड एंड वी हैव हेयर ऑन इट, हैमर्स का जो हेड है क्या उसके ऊपर भी हेयर है? दैट इज द क्वेश्चन। एज द फुट ऑफ माउंटेन एनी टोज, लाइक हाउ वी ह्यूमंस हैव फुट एंड वी हैव टोज, माउंटेन also have foot, but do they have toes? And is there a pair of garden hose? ठीक है, कि गार्डन का जो होस है, जो पाइप है, वो सभी यहाँ पे क्या होता है? आपका स्टॉकिंग्स या सॉक्स पे होता है। तो जैसे आपका सॉक्स या स्टॉकिंग्स पैर में आता है, वैसे ही जो गार्डन का होस है, मतलब क्या जो वो गार्डन का पाइप है क्या वो भी पैर में आता है? नेक्स्ट वन, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, लाइक हाउ वी ह्यूमन हैव आईज एंड वी विंक इट, नीडल also have eyes, so do they wink it? Why doesn't the wing of a building fly, that how birds have wings and they fly? Buildings also have wings, they have sections, but do they fly? Can you tickle the ribs of a parasol? ठीक है, parasol यहाँ पे हम लोग ने देखा, it means umbrella, that how umbrella is there and उसके जो ribs है, यहाँ पे क्या था? parasol मतलब ribs मतलब क्या? यहाँ पे दो मीनिंग होगा कि जो human body के ribs है, तो it is possible for a to tickle a human body, but is it possible for you to tickle a parasol? That means umbrella. Or open the trunk of a tree at all, that how you have trunk, which is the storage thing which we have in our house, it is easy for us to open it, but tree also have trunk, so do you guys open it? That is the question which is asked. Are the teeth of a rake ever going to bite? कि रेक मतलब यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा? वो गार्डनिंग स्ट्रक्चर देखा, कि वो गार्डनिंग टूल देखा, तो वो गार्डनिंग का टूल है। जैसे वी ह्यूमंस हैव टीथ एंड वी कैन बाइट, तो गार्डन का भी वो टूल है, क्या वो भी बाइट करता है? दैट इज द क्वेश्चन। हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट, कि जो क्लॉक है, सॉरी, जो हमारा ह्यूमन हैंड है, we have left and right. Similarly, clock also have hands. So do they have any left or right? Can the garden plot be deep and dark? So plot over here basically means the structure, the starting point, the climax, the ending point. So that is it is related to movies, you can say, या कोई भी सिनेमा, या मतलब बेसिकली जो भी कोई इवेंट है उसका फ्लो ऑफ स्ट्रक्चर को आप बोलते हो प्लॉट। तो इट कैन बी डीप एंड डार्क। सो टू गार्डन प्लॉट, जो गार्डन का प्लॉट है क्या वो भी डीप और डार्क हो सकता है? वैसे। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ बर्ड्स बार्क, के बार्क यहाँ पे हम लोग ने देखा, बार्क इज दैट स्ट्रक्चर, जो ट्री का ट्रंक का जो निकल आता है लेयर, दैट इज नोन एज बार्क। तो यहाँ पे वही पूछ रहे हैं कि जो बार्क है इट इज इजी, गेट साउंड ऑफ डॉग हम लोग ने सुना है, बट जो हार्ड कवर ऑफ ट्री है उसको भी हम बार्क बोलते हैं। तो जब डॉग का बार्किंग का आवाज हमने सुना है, तो क्या आपने ट्री के बार्किंग का आवाज, ट्री का मतलब जो बार्क है उसका आवाज सुना है या नहीं? इज द पोएम अंडरस्टूड टू एवरीवन? बच्चा समझा क्या था पोएम? Yes, miss. Yes. कैसे होमोग्राफ यूज Yes. किए हैं? Yes. Okay, so now we will discuss the workshop part and warming up session. तो उसके लिए बच्चा लोग काइंडली रीजॉइन ना, वापस एक लिंक वही अपने